good morning viewers. You're watching NewsX and I'm Kriti Mehta. Let's start with the top focus now. Former Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's nephew and Trinamool Congress Member of Parliament Abhishek Banerjee faced a bruising day of political turbulence on the 30th of May, coming under attack from protesters in Sonarpur on Kolkata's southern edge and receiving a CID summon in a fake signature probe as pressure mounted on him after TMC's electoral defeat. 38-year-old Abhishek Banerjee was chased, abused and assaulted by a crowd while trying to reach the home of a TMC worker killed in post-poll violence in Sonarpur. Protesters shouted "Chor, Chor," hurled eggs, stones and slippers, tore his shirt, punched him and slapped him and broke his spectacles during a 10-minute attack. And after the attack, the TMC has started blaming the BJP as the conspirators in the attack. Now, while BJP's Dilip Ghosh says that it was nothing but the public's anger towards Abhishek and the TMC MP Mamata has shared pictures from the attack, claiming that BJP worker Sushmita Datta was in the mob that attacked Abhishek. Let's listen in to Dilip Ghosh's statement first. जो हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूट था, रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, बैरिकेड लगा दिया गया। किसने अधिकार दिया? एक छोटा भी नेता 3-3, 4-4 गाड़ी लेके सिक्योरिटी लेके घूमता है, रास्ता में ट्रैफिक पुलिस नहीं, थाना में पुलिस नहीं है, हर टीएमसी के नेता घर में पुलिस गार्ड है। क्यों? और एक से एक नेता ऐसा जो नेता हो गया एंटी सोशल, वो पैसा उगाना, सिंडिकेट चलाना, कटवानी लेना उनका काम था। इन लोग कभी किसी सज्जन लोगों से नहीं मिले, अपने एमएलए एमपी से मंत्री से नहीं मिलते थे, केवल सिंडिकेट। तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इशू को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं? हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा। तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के 2-2 एमएलए हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी। जनता ने सब देखा है। मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना, शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए। Let's in fact go close to my colleague Renik Datta now joining me on this. Renik, क्या TMC के जो एलिगेशंस हैं कि बीजेपी के लोग वहाँ थे क्राउड में जो अभिषेक बैनर्जी को अटैक कर रहे थे, इसकी पुष्टि हो पाई है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया में तस्वीर भेजा गया है, जिसमें तस्वीर में एक महिला को मेंशन टीएमसी की तरफ से किया गया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बीजेपी वर्कर्स है उनका नाम है सुष्मिता दत्त, वो बीजेपी कर्मी है और वो एकदम सक्रिय बीजेपी कर्मी है सोनारपुर का, वो इस इंसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ था। अभी जांच का ऊपर अंडे फेंकने का जो घटना घटा है, उस घटना में वो शामिल थे, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना के साथ बीजेपी का कोई तारुफ नहीं है, बीजेपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है और बीजेपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक ड्रामा तैयार किया जा रहा है, जिसमें एक सिंपैथी गेन करने का कोशिश जो है वो अभी टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले को लेकर अभी दिलीप घोष भी अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमलावर है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 15 सालों पर जो लोग 22 गाड़ी का कन्वॉय लेकर घूम रहे थे, वो रास्ते में उतरने का उस पर क्या जरूरत था? जो उन्होंने अभी तक जो चीज नहीं किया वो अभी करने का कोशिश कर रहे हैं और ये सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, और जनता का जो आक्रोश वो देखने को मिल रहा है। जेपी नड्डा की गाड़ी के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ था, वो हमले का घटना भी लोगों को याद है, ऐसा भी दिलीप घोष की तरफ से कहा गया है। यानी एक तरफ जब अभिषेक बनर्जी के हमले की घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर है, तो उसी सिचुएशन में
बीजेपी भी लगातार इनको घेरता हुआ नजर आ रहा है ये मामले को लेकर। जी बिल्कुल, बीजेपी का ये बयान है, बट अब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग मौजूद थे, उन्होंने अटैक करवाया है। बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने दिया, जबकि उनके रिपोर्ट्स बिल्कुल बता रहे हैं कि उनके एडमिशन की ज़रूरत ही नहीं थी। रैनिक, तो अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार एक ही दावा किया जा रहा है कि ये पूरा घटना के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी के कर्मियों की तरफ से अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला किया गया है। बीजेपी की तरफ से अभिषेक बनर्जी को ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया, क्योंकि अस्पताल के तरफ से अभिषेक बनर्जी को मृत्यु करने पर इनकार कर दिया गया था। ममता बनर्जी का आरोप है कि पॉलिटिकल प्रेशर में आकर अस्पताल की तरफ से ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। मगर दूसरी तरफ डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी का तबियत एकदम ठीक है, अभिषेक बनर्जी का कोई चोट नहीं लगा है, सीरियस स्थिति नहीं है। अभिषेक बनर्जी कौन-सा से बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में उनको भर्ती करने का जरूरत नहीं है, ऐसा अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है। मगर ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी की तरफ से प्रेशर देने की वजह से अस्पताल में अभिषेक बनर्जी को भर्ती नहीं किया गया है, अभिषेक बनर्जी का ट्रीटमेंट भी सही तरीके से नहीं किया गया है और पूरा घटना के पीछे बीजेपी का हाथ है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। जी रैनिक, बिल्कुल, those are the details in fact coming in now. Opposition leaders have also dialed up Mamata Banerjee to condemn the attack on Abhishek Banerjee in Sonarpur. रैनिक, हमें ये भी बताइए कि फिलहाल अभिषेक बैनर्जी कहाँ है, कैसी स्थिति है उनकी, क्या कोई स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या क्या मीडिया से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, उनको कल रात ही घर में शिफ्ट किया गया है, उनका घर में ही ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी का ट्रीटमेंट के लिए घर में ही बंदोबस्त किया गया है। जो फैमिली टीचर्स है उनकी तरफ से जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। अभी सलाइन अभिषेक बनर्जी को चलाया जा रहा है, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। और साथ साथ जो फैमिली टीचर्स है उनकी तरफ से अभिषेक बनर्जी का ट्रीटमेंट वो दिया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि ये पूरा घटना को लेकर वो कोर्ट तक रुक करेंगे, कोर्ट में मामला करेंगे और पूरा घटना के साथ जो शामिल थे उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, ऐसा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है। जी रैनिक, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए हमारे साथ। व्यूअर्स, इनफैक्ट वी आर नाउ जॉइंड इन बाय जयप्रकाश Majumdar, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द Trinamool Congress. Mr. Majumdar, thank you very much for joining us. How do you respond to the attacks on Abhishek Banerjee? Very deplorable act on behalf of the present state government of West Bengal. Because after all, Abhishek Banerjee, not only he is the top leader of a recognized political party who has ruled Bengal till recently, but Trinamool Congress party is also, by its sheer number of parliamentarians, is third largest in India. And for democratic value only, the current BJP government led by Shubhendu Adhikari, they are supposed to follow the Raj Dharma, which include protection and security for all citizens, especially who happens to be a parliamentarian, member of parliament. And with due notice to the government, Abhishek Banerjee went to see a family, a sad family who has lost their son in recent times. But the way he was attacked, the way the state security looked other way, they didn't provide any sort of security despite repeated requests. That shows, it's a question, is it a beginning of jungle Raj in Bengal? And another deplorable part of the whole thing is that state BJP has justified the attack on Abhishek Banerjee, saying that earlier time
similar thing like not giving permission for Subhendu Adhikari's meeting, any other thing, etc. As if two wrong can make one right. That is the thing I remember Atal Bihari Vajpayee. All right, Mr. Majumdar, but what I want to ask you is that why are you and the TMC saying that BJP is behind this attack? What proof do you have to say that? Because there were many faces present who are active member of BJP. If you want, you can check the social media that they are the leaders who have actively took out this protest, who has attacked Abhishek Banerjee. The leaders of the gang were known BJP leaders of that area. That is the simplification. And another question, why BJP government, despite knowing that Abhishek Banerjee going, they have been informed that some people has accumulated for an attack. They did not intervene to start with. That's the question. Why BJP government, the police, they have gone after the attack was completed. After that, they have sent police and paramilitary forces. All right. Mr. Majumdar, what I also want to ask you is that the two hospitals that Abhishek Banerjee was sent to, firstly the clinic where he went to and then the Apollo hospital where he was sent. Both the reports are saying that he did not suffer any serious injuries. There were minor bruises on his chest. Why is Mamata Banerjee and the TMC then saying that he will need oxygen support, that he was denied admission because of the BJP pressure on the doctors? Why these kind of allegations on the doctors are being made when the reports are clearly suggesting he doesn't require admission? Look, madam, there is something called observation. If any hospital, any person comes and say that I am feeling uncomfortable due to some physical ailment, usually any doctor or any medical practices is to keep under observation, do all the things and to see why he is feeling such uncomfortable situation. Question is, these two hospitals categorically they showed their unwillingness, even that if there is anything happened within, I will tell you further which family Abhishek Banerjee went to see yesterday. Their case study, please note, that person was attacked by BJP and he died due to internal hemorrhage. Several days later, he was at home, but there was internal hemorrhage and that person died 3-4 days later. That is the example that how there may be internal injury. The hospital just says there is some bruises outside. Sorry, we cannot keep him. That sort of attitude shows that what kind of autocracy has set in Bengal, that even private renowned hospitals, they are afraid of putting up Sahi treatment, actual treatment to person who is a Trinamool leader. That is the current situation in Bengal. That's why I would like to say, it's difficult to understand what you're saying, Majumdar, Mr. Majumdar, but we send good wishes for a speedy recovery to Abhishek Banerjee. Thank you very much for joining us.